This session is designed for those of you who are guests with us today or those of you who are just getting started. और अब जो सेशन होने वाला है ये उन लोगों के लिए है जो हमारे मेहमान हैं, नए पर्सन्स, और उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी यूनिसिटी शुरू किया है. I'm going to walk you through the process of starting your business. और अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस बिजनेस की सही शुरुआत करनी है. Now, many of you just saw that business presentation. That's something that you can print out, turn into a presentation book, and present to your own prospects as you introduce them to this business. जिन लोगों ने भी अभी पिछले 1 घंटे में प्रेजेंटेशन देखा, ये जो स्लाइड्स हैं, अगर आप इनका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बुक तैयार हो जाएगी. And your President's Club members who you heard from will have copies of all those slides today, and a copy of that same presentation as a PDF they'd be happy to give you. और आपके यूजर्स हैं, उनसे आप ये सारे स्लाइड्स ले सकते हैं और वो आपकी मदद करने में बहुत खुश रहेंगे. Now, for those of you who are just getting started, it's important to understand the way you get started is the way you're going to get other people started. और जो लोग भी अभी इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे आप एक शुरुआत करेंगे वैसे ही आपकी टीम भी शुरुआत करेगी. The single most important decision that you need to make when starting your business is, are you coachable? और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आपको लेना है इस बिजनेस में शुरू करने के लिए कि क्या आप सीखने की इच्छा रखते हैं. You can follow our proven system, or you can reinvent the wheel and do whatever you want. या आप जो सिस्टम चला आ रहा है उसको फॉलो करें, या आप अपना दिमाग लगा के कुछ नई चीज निजात करें. But I've made over 174 crore following this system, so I would suggest that you do the same thing. टॉड ने 174 करोड़ रुपए कमाए हैं इस सिस्टम के थ्रू, तो आपके लिए ये सजेशन है कि आप भी इसी सिस्टम को फॉलो करें. Now there are 8 steps to getting started. 8 स्टेप्स हैं इसको शुरू करने के लिए. The first step is to become a Unicity distributor. सबसे पहला कि आपको यूनिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है. To become a Unicity distributor, there is no cost. यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए. You go to unicity.com/India. आप वेबसाइट खोलेंगे unicity.com/India को, and there you can enroll as a distributor. और वहाँ पर एनरोलिंग का फॉर्म भरेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे. The person who invites you here today would be happy to walk you through the process of enrolling as a distributor. और जिस पर्सन ने भी आपको आज यहाँ आमंत्रित करा है वो आपकी मदद करेंगे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने में. The second step in getting started is to place your order for products. और दूसरा कदम ये है कि आपको अपना पहला प्रोडक्ट ऑर्डर लगाना है. Now there are 3 things you need to consider when placing your order. 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप ऑर्डर को लगाएंगे. The first of which is experiencing our products. सबसे पहले ये प्रोडक्ट को आपको खुद पर इस्तेमाल करना है. Now my advice is, if you're going to build a business with Unicity, you need to buy at least one of each of our products so that you can experience those products. और ये टॉड का सजेशन है आप लोगों के लिए कि जब आप इस बिजनेस को सही तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं तो जितने भी यूनिसिटी के प्रोडक्ट हैं कम से कम एक जरूर ऑर्डर करें ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें. Because when you introduce this business to people and they ask you, how did you like a certain product, you want to make sure that you can tell them that you've used the product. क्योंकि जब आप और लोगों से इन प्रोडक्ट्स की बातचीत करेंगे तो जब वो पूछेंगे आपसे कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा तो आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं. Because if people ask you, well, how do you like this product or that product, you go, I don't know, you lose credibility. क्योंकि अगर लोग आपसे पूछेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा या वो प्रोडक्ट कैसा लगा और आप बोलेंगे मुझे तो पता नहीं, तो वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे. The second reason you place a product order is so you have a small working inventory on hand, so when somebody wants to start using the products, you're able to get them started immediately. दूसरा कारण ये आपके पास में प्रोडक्ट होने चाहिए क्योंकि कोई पर्सन आपको ऐसा मिले जो प्रोडक्ट को इमीडिएटली लेना चाहता है तो आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो. Now part of our business is you can introduce our products and make a retail profit.
जैसे कि हमने प्लान में देखा था कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट रिटेल करते हैं तो भी हमें प्रॉफिट मिलता है. And when you introduce the product to somebody who wants to use it, you want to be able to get them started immediately. और जब भी कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो प्रोडक्ट को शुरू करना चाहता है तो आपके पास में वो प्रोडक्ट उस वक्त होना चाहिए. The other way of selling product is when you introduce the business, just as you saw today, we cover each of the products. There's many times that people you introduce the business to say they want to begin using the products. और कई बार हम बिजनेस को अगर लेके चल रहे हैं और कोई पर्सन आपको ऐसा मिलते हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तभी भी ताकि वो उसी वक्त बिजनेस शुरू कर सकें आपके पास में प्रोडक्ट होने चाहिए. And when somebody wants to start using the products first, you want to be able to get them started right away. तो आप बिना विलंब के उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करवा सकते हैं. It's like having a little tire shop on the street. Somebody comes in and wants to buy a tire and you don't have any tires, it's going to be hard for you to make any money. आप ये सोच सकते हैं कि आपने एक टायर शॉप खोली है, वहां पर कोई पर्सन आ रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे गाड़ी के टायर चाहिए, आप बोलते हैं कि चलो मैं बताता हूँ 2-3 दिन में, तो आपका कस्टमर चला जाएगा. The third reason that you place a product order is because what you do is what tends to be duplicated by everybody who joins you. और तीसरा कारण ये है कि जिस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे आपकी टीम भी उसी तरीके से इस बिजनेस को शुरू करेगी. Because everybody you get started, you're going to sit down and review these 8 steps to getting started. क्योंकि जिस पर्सन के साथ में भी आपकी टीम में जो आएंगे आपको भी उनके साथ बैठ के ये 8 स्टेप्स बताने हैं. And when you cover this step, people are going to say, "What did you do?" और जब आप इस स्टेप के बारे में बताएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे शुरू किया. And you want to be able to share with them what you did so that they do the same thing. और आप उनके साथ वो बताना चाहेंगे जो आपने किया ताकि वो भी उसी तरीके से सही तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकें. And the order that you place when it's duplicated has a significant impact on the income you earn. और अगर जो ऑर्डर आपने अच्छा ऑर्डर प्लेस करा है और वही डुप्लीकेट होता है तो आपकी आमदनी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. Now our products, because we're a global company, have what's called points assigned to each product. क्योंकि यूनिसिटी एक ग्लोबल कंपनी है इसीलिए हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं. Every product has a different point value. और हर प्रोडक्ट में जो पॉइंट वैल्यू होता है वो अलग-अलग होता है. And the points are what commissions are paid on. और जो भी आपके कमीशंस बनते हैं वो इस पॉइंट्स के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं. Because of all the currencies around the world, we have to use one unified way of measuring our products and paying commissions. क्योंकि अलग-अलग देश में अलग-अलग करेंसी है इसीलिए यहाँ पर एक ग्लोबल करेंसी यानी पीवी यूज किया गया है. So if you came in the business and you placed a 100-point order and you had that duplicated by the first 5 people you bring in, you will make 5% on each of those people. तो अगर आपने 100 पॉइंट से शुरू किया और आपने 5 जनों को एनरोल करा तो उसी तरीके से आपको वो कमीशन आएगा. Or 1,250 rupees. और 1250 रुपए आपका कमीशन बनेगा. Oops, sorry. If you came in and you placed a 250-point order and that was duplicated by 5 people, now you make 6,250 rupees. और अगर आपने 250 पॉइंट से शुरू किया और आपने 5 जनों को आगे इंट्रोड्यूस किया जो 250 पॉइंट से शुरू करते हैं तो आपको 6,250 रुपए का पे आउट बनेगा. And if you came in with what we call our manager pack with 500 points and you brought in 5 people, you would make 31,000 rupees. और अगर आपने मैनेजर पैक से शुरू किया और आगे 5 जनों को आप लेके आए जो सेम मैनेजर पैक से शुरू करते हैं तो अब आप 31,000 से ज्यादा पैसे कमाएंगे. Now, I'll tell you, when I came in the business, I came in as a manager. और टॉड ने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैनेजर पैक से शुरू किया था. I actually bought a lot more products than just the manager. और उस वक्त सिर्फ मैनेजर पैक ने उससे भी थोड़े ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे थे. And I sold all those products in the first month. और जितने भी प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदे थे वो सारे ही प्रोडक्ट उन्होंने पहले महीने में ही बेच दिए थे. And as a result of that, when I brought in 20 people my first month, guess what all 20 did? और जब पहले महीने में इन्होंने 20 जनों को एनरोल करा अपने साथ बिजनेस में तो आप सोच सकते हैं उन्होंने किस लेवल से शुरू किया होगा. They all came in as managers. तो सभी लोगों ने मैनेजर पैक के साथ शुरू किया. And for 27 years I've been able to stand on the stage and say I came in as a manager. और 27 साल से अब वो जब भी स्टेज में जाते हैं तो बता सकते हैं लोगों को कि उन्होंने
मैनेजर पैक से इस बिजनेस को शुरू किया था। And if you're truly committed to building a long-term business with Unicity, what do you want to be able to say when you stand on stage 25 years from now? अगर आप भी यूनिसिटी को जीवन भर करना चाहते हैं एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ में, तो आप क्या कहना चाहेंगे स्टेज में जब खड़े होंगे कि किस पैक से आपने शुरू किया? Now, at the same time, I don't encourage you to place an order that you can't financially afford. हो सकता है किसी को अभी कुछ आर्थिक समस्या हो और वो ना कर पाए, तो ऐसा नहीं करना। So you need to take into consideration your goals and your financial resources in determining what's right for you. तो आपको अपना सपना, अपना लक्ष्य भी माइंड में रखना है और साथ में अभी अपनी जो प्रेजेंट आर्थिक स्थिति है उसको भी माइंड में रखते हुए शुरू करना है। The last thing we want somebody to do is to place an order they can't afford. तो आपको ऐसा ऑर्डर नहीं प्लेस करना जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। Now, the third thing you need to do as you start your business is you need to make a list of your goals. और जो तीसरी चीज आपको करनी है, जो आपके लक्ष्य हैं, अपने लक्ष्य की एक लिस्ट बनानी है। Why are you doing this business? आप यूनिसिटी को क्यों कर रहे हैं? Now, some of the things that you need to consider as far as goal setting are the following. और गोल आपको कैसा बनाना है, आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कुछ टिप्पणी। Think about what kind of home would you like to live in? आप एक कैसे घर में रहना चाहेंगे? Take a picture from a magazine of what your home would look like. कोई भी मैगजीन में जहां पर आपको अपने सपनों का घर लिखता है, उसको आप काट के रख सकते हैं। Look at this every day and use it as motivation to work hard and do the things that are going to bring you success. और उस फोटो को प्रतिदिन देखिए ताकि वो आपको प्रेरणा दे आगे काम करने के लिए। You should also consider what kind of car you would like. और आप किस तरह की गाड़ी चलाना चाहते हैं? I just bought my wife a new Porsche, टॉड ने अपनी वाइफ को अभी एक न्यू पोर्श गाड़ी दी, a turbocharged Porsche, और वो टर्बो मॉडल है पोर्श का। and I'll have to tell you something that she doesn't even know. और आपको बताना चाहते हैं कि अभी उनको भी नहीं पता। When I bought the car, I drove it home. जब उनको नहीं बताया और गाड़ी खरीद के घर लेके गए, And guess how fast I drove that car? और आप सोच सकते हैं कि उस गाड़ी को कितना तेज रफ्तार से लेके गए होंगे। I wish I could tell you in kilometers, but I drove it at 161 miles per hour. तकरीबन 220-250 किलोमीटर की रफ्तार से उस गाड़ी को चला के लेके गए। Yeah, my hands were sweating, और उनके हाथों से पसीना आ रहा था उस वक्त। but it's a nice car. बहुत बढ़िया गाड़ी है, Yeah, that's her dream car. क्योंकि उनकी वाइफ की वो ड्रीम कार थी। So it wasn't my dream car, it was her dream car. वो टॉड की ड्रीम कार नहीं थी, वो उनकी वाइफ की ड्रीम कार थी। So maybe you need to also find out what your spouse's dream car is. तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके पार्टनर की कौन सी ड्रीम कार है। Because I've learned when mama's happy, daddy's happy. खुश रहना चाहते हैं। Another thing to consider is where would you like to travel? साथ ही साथ आपको ये सोचना है कि आप कौन-कौन से देशों में घूमना चाहते हैं। My youngest daughter, when she moved out of the home and went to college, had 27 passport stamps from 27 different countries. टॉड की बेटी जब वो घर में कॉलेज के लिए गई, उससे पहले उनके पासपोर्ट में 27 अलग-अलग देशों के ठप्पे लग चुके थे। Yeah, you could travel the world. और यूनिसिटी में आप पूरे विश्व को घूम सकते हैं। Unicity will pay for you to travel to the reward trip locations. सबसे बड़ी बात है कि यूनिसिटी पैसा खर्च करती है जब आप किसी रिवॉर्ड ट्रिप पे जाते हैं, आपका जेब से एक पैसा नहीं खर्च होता। And then the income you earn, you can use that to travel everywhere else. और साथ ही साथ जो आपकी आमदनी आ रही है, उस आमदनी से आप अपने जो भी देश में जाना चाहते हैं वहां पर घूम सकते हैं। If there's been some places you've dreamed of traveling to, get pictures of that, put on the wall in your home where you see them every day. तो जो भी ऐसी जगह, ऐसे देश आप घूमना चाहते हैं, उसकी भी आप फोटो काट के कहीं ना कहीं उसको जरूर चिपकाइए जहां पर वो दिखती रहे। And use that as motivation to cause you to work each day. ताकि आपको प्रेरणा मिले कि यूनिसिटी से आप ये सारे सपने पूरे करेंगे। Because you are the president and CEO of your own company and you are in charge of your future. क्योंकि आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, मालिक हैं, सीईओ हैं, और यहाँ से आप सारी चीजें पूरी करेंगे। So nobody's going to be telling you what to do. कोई भी जना आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, except for you. लेकिन आप अपने आप को बता सकते हैं कि क्या करना है। Yeah, part of what will drive you to work is what your dreams are.
तो यहाँ पर आपको काम करने की प्रेरणा आपके सपने देंगे। Another question is, who would you like to help and why? और साथ ही साथ आप किन लोगों की मदद करना चाहेंगे और क्यों? My wife is currently very involved in raising money for the South Sudan refugee children who've been forced from their homes. जैसे कि टॉड की वाइफ अभी उन लोगों के लिए पैसा अरेंज कर रही है जो कि रिफ्यूजीज हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास रहने का घर नहीं है। She was in Africa in October. She's going back in March. अभी अफ्रीका में थी और अब दोबारा मार्च के महीने में दोबारा अफ्रीका में जाएंगी। Many of these children saw their parents get killed during the clash in South Sudan. और सूडान में जब आपस में लड़ाइयाँ हुई तो बहुत सारे बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपने माँ बाप का खून होते हुए देखा। Over 80% of the children don't even have moms and dads in the refugee camps. वो जो रेफ्यूजी कैंप है अनाथ बच्चों का, वहाँ पर 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। So one of the great things you can do in this business is you build your business. You can help those who are less fortunate, whomever they may be. तो इस बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है, आपके दिल को जो चीज छूती है लोगों की मदद करने के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। Yeah, and so if it is not so much of interest to you, maybe it's of interest to your spouse, like it is for my wife, to go and travel the world and to help those who are less fortunate. हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो मदद करने का, लेकिन आपके पार्टनर का हो, जैसे कि टॉड की वाइफ जो है अभी उन बच्चों की मदद कर रही है अफ्रीका में जाके। Another thing you should do is to make a list of what are the top 3 things you would like to do to improve your health. साथ ही साथ आप अपनी सेहत के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि अच्छी हो। Maybe it's lose weight. हो सकता है आप वजन कम करना चाहते हो। Maybe it's to lower your blood sugar. हो सकता है आप अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल लाना चाहते हो। Maybe it's to improve the appearance of your skin. साथ ही साथ हो सकता है कि आप अच्छा दिखना चाहते हो। So it's very important in our business to focus on improving your health. हमारे इस बिजनेस में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। And we can show you how to do that. और यहाँ पर ये बताया जा सकता है कि कैसे आप उसको पूरा कर सकते हैं। The other thing is to list the top 3 ways your life will improve when you achieve your goals. साथ ही साथ ऐसे 3 चीजें भी आपको देखनी है कि आपका जीवन कैसे बेहतर होगा जब आप इन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। It might be sending your children to a private school. हो सकता है कि आप अपने बच्चों को और अच्छे स्कूल में भेज सकें। It might be sending them to college here in India or somewhere else around the world. और उनको एक हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, चाहे हिंदुस्तान में या बाहर के देश में भेज सकें। So think about what's important to you. तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। How would you like your life improved? आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं? And all of these things will serve as motivation to push you each day to do the things that are going to grow your business. तो ये सारे लक्ष्य सपने आपको प्रेरणा देंगे प्रतिदिन काम करने के लिए। What are your income goals? आप कितनी आमदनी कमाना चाहते हैं? And I recommend that you establish what your goals are for each month for the first 6 months that you start your business. और जो पहले 6 महीने आपके यूनिवर्सिटी के हैं, उन 6 महीनों में आप कौन-कौन सी इनकम पर जाना चाहते हैं? And then with the person who invited you here today, put together a plan to achieve your first month's goal. और जिस पर्सन ने भी आपको आज इनवाइट करा है, उनके साथ में बैठ के ये पूछिए कि क्या करना होगा इस इनकम पर पहुंचने के लिए। And then once you reach your first month's goal, then put together a plan to reach your second month's goal. पहले जब आपने प्लान बनाया और पहला अपना लक्ष्य अचीव करा, उसके बाद दूसरे महीने की कौन सी इनकम पर और उसके लिए प्लान बनाइए। Step 4 is to make a commitment to your business. अपने बिजनेस के लिए एक वचन दीजिए, एक कमिटमेंट दीजिए। If you think about the things in your life that you're most proud of, your greatest accomplishments, those are the things that most likely you are most committed to. आप अपने जीवन में जो चीज आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वही चीज आपको प्रेरणा देंगी आगे बढ़ने के लिए। You see, anytime you're in business for yourself, you're going to go through highs and lows. और बिजनेस के अंदर भी हमेशा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। And when you get to a low and you want to quit, you can't. और जब भी कोई उतार आएगा आपके बिजनेस में और आप इस बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं, आप नहीं छोड़ेंगे।
Winners never quit and quitters never win. जो विजेता होते हैं वो जंग का मैदान छोड़ के कभी नहीं भागते. And if I'm honest with you, I would say that I have wanted to quit at least 100 times. और अगर टॉड आपसे ईमानदारी से बताएं तो अपने इस कैरियर में कम से कम 100 बार उन्होंने इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में सोचा. Yeah, there's many times I said, I just want to travel the world and go fishing. बहुत बार उनको लगा कि नहीं मैं तो पूरी दुनिया में बस फिशिंग करने जाना चाहता हूँ. And then I'm reminded of the ability I have to impact millions of lives around the world, and to me, that is most rewarding. लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि उनके इस शेयरिंग से बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के जीवन में ये बदलाव लेके आ सकते हैं, और फिर वो दोबारा इस बिजनेस में आए. Number 5 is to block out time each day to build your business. साथ ही साथ आपको कुछ समय जरूर निकालना है इस बिजनेस के लिए. कब कब आप इस बिजनेस को करेंगे वो समय ब्लॉक करना भी बहुत जरूरी है. Just like each business down on the road has hours of operation, your business needs to have hours of operation. जैसे कोई भी बिजनेस के लिए पता है कि कितने बजे खुलता है कितने बजे बंद होता है, इसी तरह आपको भी यूनिवर्सिटी के लिए सोचना है कि कितने घंटे आप इस बिजनेस के लिए निकालेंगे. These are the hours that you're committed to working your business each day. एक बार आपने जब कमिटमेंट करा कि ये इतने घंटे प्रतिदिन निकालेंगे, so block out a window of time every day that you are committed to working your business. तो उस समय जो भी आपने समय निकाला अपने लिए कि उस समय पर यूनिवर्सिटी करेंगे, उस समय पे आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ही करना है. And then make a commitment you're not starting 1 minute late. और आपको वो जो समय आपने निर्धारित किया उससे 1 मिनट भी लेट नहीं शुरू करना. It's your business, so treat it like it's your business. क्योंकि ये आपका बिजनेस है और आपको इसको एक बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना है. Step 6 is to make a list of everyone you know. और छठा स्टेप ये है कि आप जितने लोगों को जानते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें. They say the average person knows 2,000 people on a first name basis. और ये कहा गया है कि एक औसत जो व्यक्ति है कम से कम 2000 जनों को जानता है. Now more than likely many of you are saying there's no way I know 2,000 people. बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा विचार कि नहीं मैं तो 2000 जनों को नहीं जानता हूँ. But if I gave you 1,000 rupees for every name you put on the list and you had until tomorrow morning, I bet you would come up with 2,000 names. अगर टॉड आपको 1000 रुपए देंगे हर एक नाम का जो आप लिखेंगे और कल सुबह तक का समय दिया तो सब जने 2000 नाम लिख के आ ही जाएंगे. So go through your cell phone. तो अपने सेल फोन में जो भी लिस्ट बनी है वहां पर जाइए. Look at all your contacts. जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी नंबर हैं. Look at everybody whose email address you have. और आपने ईमेल में देखिए कि कितने लोगों की आपके पास ईमेल एड्रेस है. If you're on Facebook or another social media site, look at who all your contacts are. और अगर आप फेसबुक में या और कोई सोशल मीडिया करते हैं वहां पर देखिए कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं. Be creative. Who does your taxes? और साथ ही साथ ये देखिए कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है. Who cuts your hair? आप कहां पर बाल कटाने जाते हैं. Yeah, start thinking of everybody you know. उन सभी लोगों के बारे में सोचना शुरू कीजिए जिनसे आपकी जान पहचान है. And then put a B for business next to those that you want to approach on our business. उस लिस्ट में से जिनको आप बिजनेस दिखाना चाहते हैं उनके नाम के आगे बी लिखिए. And then put a P for product next to everybody that you want to approach on our product. और बाकी लोग जो उनको आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे उनके नाम के आगे आप पी लिखिए. And then put a star next to the sharpest, most successful people on your list. और उस लिस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको लगता है इस बिजनेस करने के लिए रहेंगे इच्छुक उन लोगों के आगे स्टार लगाइए. And my advice is to start with those people you starred. और आपके लिए ये एडवाइस है टॉड का कि जिन लोगों के आगे नाम के आगे स्टार लगाए उन्हीं लोगों से आप शुरुआत कीजिए अपने लिस्ट की. Over 27 years I've learned that the sharpest, most successful people are the first people that see the benefits of this business. क्योंकि जो लोग भी सफल हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं वही लोग इस बिजनेस को भली भांति समझ सकते हैं. And when they join, because they're respected, when they call people, people listen. और क्योंकि अपनी सफलता की वजह से बहुत सारे लोग उनका आदर करते हैं तो जब ये इस बिजनेस को शुरू करते हैं वो बहुत तेजी से अपने जैसे और लोग लेके आते हैं.
So start with your sharpest, most successful people and you will see your business grow rapidly. तो अपनी लिस्ट में से जो सबसे सफल लोग हैं उन लोगों से शुरुआत कीजिए. If you start with the people lower on the list, your business will grow slow. लेकिन अगर आप वैसे लोगों को लेके आएंगे जो बहुत सफल नहीं हैं, तो आपका बिजनेस भी धीरे-धीरे चलेगा. And it's easier to build this business fast than slow. और यूनिसिटी बिजनेस ऐसा है कि अगर हम तेज करें तो आसान है, धीरे-धीरे करें तो मुश्किल है. And it's more exciting to build it fast than slow. और तब और एक्साइटिंग रहता है जब ये बिजनेस तेजी से ग्रो करता है. Number 7 is to schedule your first 3 presentations. जो 7वां स्टेप है कि आप अपनी पहली 3 प्रेजेंटेशन फिक्स कीजिए. With the person who introduced you to the business, block out 3 windows of time that you're committed to putting your best prospects in front of this person. जिस पर्सन ने भी आपको इनवाइट किया है यूनिसिटी बिजनेस के लिए, उनके साथ 3 अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए जहां पर आप अपने सबसे सफल लोग जो आपके लिस्ट में उनके सामने प्रेजेंट कर सकें. And they will introduce this business to those people for you. तो आपके जो इंट्रोड्यूसर है यूनिसिटी में, वो आपके बिहाफ पर उनको प्लान देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे. And this will allow you to learn how we present the business. और इस तरीके से आप सीख सकेंगे कि इस बिजनेस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है. Just like today, watching this presentation kind of gave you some ideas of what you could say when you turn the pages and introduce this business to others. जैसे आज आपने जो प्रेजेंटेशन देखी पहले 1 घंटे की, उसमें आपको ये समझ में आ चुका है कि कैसे इस बिजनेस को सही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. And if the person who invited you here today is new, there's somebody in your support team who would be happy to go do these presentations for you. और अगर वो पर्सन जिन्होंने आपको इनवाइट करा है, अगर वो भी अभी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कोई ना कोई ऐसे उनके एक्टिव अपलाइन होंगे जो बहुत खुशी-खुशी आपकी मदद करेंगे उस प्लान को दिखाने के लिए. And then the 8th step to getting started is to prepare for dream stealers. और 8वां कदम भी महत्वपूर्ण है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो सपने चोरी करते हैं. These are people who are going to try to discourage you from doing this business. ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो आपको इस बिजनेस के लिए डिस्करेज करेंगे. You don't want to let anybody steal your dream. और आप कोई भी ऐसा जना नहीं चाहते जो आपसे आपके सपने चुरा ले. There's a lot of negative people out there. बाहर की दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है. If somebody tries to steal your dream, look at their life and ask yourself, is this somebody I want to be listening to? तो कई बार हम ऐसे लोगों का उपदेश सुनते हैं जिनका खुद का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, तो आप जो आपको उपदेश दे रहे हैं उनका जरूर देखिए कि वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं. क्या आप उनका उपदेश सुनना चाहते हैं? And if they are somebody you respect, you say, could you do me a favor? और हो सकता है कि ऐसे पर्सन बोले जिनका आप बहुत आदर करते हैं, तो आप उनसे बोलिए, क्या आप मेरा एक फेवर कर सकते हैं मेरे लिए? You're sharing this with me because you care about me, right? आपने ये सब बातें इसलिए बोली क्योंकि आप मेरे लिए केयर करते हैं. Would you be willing to take a look at this business and tell me, after you understand it, why I shouldn't be doing it? तो एक बार मेरे लिए इस बिजनेस को जरूर आप समझिए और उसके बाद आप बताइए कि मेरे को ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए. But don't let anybody steal your dream. लेकिन किसी भी जने को अपने सपने चुराने मत दीजिए. No matter what dream you have, don't ever let anybody steal it. जो भी आपके सपने वो आपके हैं और किसी का भी हक नहीं है कि वो आपसे आपके सपने चुराए. And my encouragement for those of you who are guests here today is get started right. और जो लोग भी आज नए गेस्ट हैं, टॉड ये चाहते हैं कि आप एक सही शुरुआत करें. The way you get started is the way you're going to get everybody else started. क्योंकि जिस तरीके से आप शुरुआत करेंगे वैसे ही आपकी टीम में लोग शुरुआत करेंगे. Be the example you want to duplicate. आपको एक अच्छा उदाहरण बनना है जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम वाले भी वैसा करें. And here's what I want all of you to know. और आप सभी लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहते हैं. In 27 years, I've seen people from every walk of life who have seen their dreams come true with UNICITY. पिछले 27 साल जो उन्होंने यूनिसिटी में दिए, इन्होंने हर उस इंसान को अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग प्रोफेशन के अपने सपनों को यूनिसिटी के द्वारा पूरा होते हुए देखा है. There's no doubt that you're going to have times where you question whether or not you think you can really do this. और ऐसे समय जरूर आएंगे, जानते हैं कि जब आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ. In Hong Kong, where we had our global convention just a few weeks back, we heard the stories of some of the people who've been successful in our company. कुछ हफ्तों पहले हांगकांग के अंदर कन्वेंशन हुआ था और वहाँ पर बहुत लोगों की हमें सक्सेस स्टोरी सुनने को मिली. There was one person, they called him Banana Man.
वहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसको बोलते थे बनाना मैन. He went and picked bananas and had his bike full of bananas, and he took them to market every day to sell the bananas. वो केलों को खरीद के अपनी मोटरसाइकिल में उसको लाद के मार्केट में जाके बेचता था. Long hair. उनके लंबे बाल थे, जो पर्सन की बात कर रहे हैं. He hardly made any money selling these bananas. और उस वक्त बहुत मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था. But he had a dream of a better life. लेकिन उसका सपना था कि अपने जीवन को बेहतर करे. And even though he lacked confidence, he said, I'm going to do my best. और शुरू में उसको आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन उसने बोला कि मैं कोशिश करूंगा और बेहतर बनूंगा. And now he's been able to build a successful business with Unicity, and he started to see his dreams come true. और आज यूनिसिटी में एक बहुत सफल इंसान बन चुके हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं. There's other people that I've seen. I mean, there's one person who used to go car to car selling sugarcane juice. और ऐसे पर्सन को भी टॉड जानते हैं जो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक जाके गन्ने का जूस बेचता था. He had a dream of a better life. लेकिन उनका भी सपना था कि मेरा जीवन बेहतर हो. He didn't want to be going car to car selling sugarcane juice. पूरे जीवन एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी गन्ने का जूस बेचना नहीं चाहता था. And now he's a presidential director. और आज वो यूनिसिटी में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है. In fact, the top earning female in our entire company, who's a Crown Diamond, before she got started, she worked as a seamstress sewing in a factory. और जो क्राउन डायमंड है, जो पूरे यूनिसिटी के अंदर पैसा जिसने सबसे ज्यादा कमाया लेडीज में, वो पहले एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी. For 10 hours a day, she sat there with the sewing machine. और एक दिन में 10 घंटे वो सिलाई की मशीन में बैठ के कपड़े सिला करती थी. She had a dream of a better life. लेकिन उनका सपना था. Of course, she lacked confidence. और शुरुआत में उनको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं था. But she was willing to give it enough that she started to see her business grow. लेकिन एक तीव्र इच्छा शक्ति थी और उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया. And as it began to grow, her confidence grew. और जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करना शुरू हुआ, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ना शुरू हुआ. And now she's built a business that pays her more money each month than even I earn. और अब क्योंकि वो ऐसी रैंक पर पहुंच चुकी है जिससे जो टॉड भी हर महीना कमाते हैं उससे भी ज्यादा वो अर्निंग्स पर पहुंच चुकी है. She drives a Lamborghini supercar. उनके पास में लैम्बोर्गिनी सुपर कार है. She owns a big, beautiful home. बहुत बड़ा घर है. She's built her own 5-star hotel. अपना खुद का 5-स्टार होटल है. Yeah. And she was just a seamstress sewing in a factory. और जो फैक्ट्री में सिर्फ एक सिलाई का काम करती थी. No education. कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी. See, the great thing is we all start at the same level. सबसे अच्छी बात क्या है कि हम सब लोग एक ही लेवल से शुरू करते हैं. A person with a high education has no more of an advantage than a person with no education. और इसके अंदर किसी की एजुकेशन बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. What matters most is, do you have a dream of a better life? जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो फर्क होता है कि आपके सपनों में कितनी जान है. Are you willing to take steps to improve your life? क्या आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कदम उठाना चाहते हैं? And when you get down and discouraged and frustrated, are you willing to keep going, or are you going to quit when that happens? और जब इस बिजनेस में आप कभी हताश होंगे, निराश होंगे, तो क्या इस बिजनेस को छोड़ देंगे या कमर कस के दोबारा से मेहनत करेंगे? There are hundreds of these stories worldwide with our company. हजारों ऐसी सफलता की कहानियां हैं यूनिसिटी के साथ अलग-अलग देशों में. But you need to believe in yourself. आपको अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है. You have to believe there's no difference between you and those who are at the top. आपको ये जानना जरूरी है कि आप में और वो लोग जो स्टेज में खड़े होते हैं या जो टॉप लेवल में कोई फर्क नहीं है. Just make a commitment to be coachable. बस आपको अपने आप को ये वचन लेना है कि आप हमेशा सीखने की इच्छा रखेंगे. I think about our top earning female in Korea. और जो कोरिया में टॉप अर्निंग लेडीज हैं यूनिसिटी में. And I remember going to Korea when we opened Korea and seeing her sitting in a room.
और टॉड को अच्छी तरह याद है कि इसी तरह जब वो कोरिया गए थे और उन्होंने उनको एक ऑडिटोरियम में मीटिंग हो रही थी, वहां बैठे हुए देखा था. No different than that lady sitting right there. और जैसे ये लेडी यहाँ पर बैठी है, कोई फर्क नहीं था. Of course she questioned whether she could do this. और उनके मन में भी ये प्रश्न था, क्या मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ? But I remember that she was coachable. लेकिन उनमें ये था कि हाँ, मैं सीख सकती हूँ, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है. She never missed an event. कोई इवेंट नहीं मिस किया. Her business did not grow fast. और उनका बिजनेस बहुत तेजी से नहीं ग्रो हुआ. It took her years just to reach the President's Club member, become a President's Club member. और एक PCM क्लब में पहुंचने में भी उनको कई साल लग गए. But once she got there, it was like she then began to believe that she could do it. लेकिन एक बार जब वो वहां पहुंची तो उनके ऊपर इतना आत्मविश्वास आ गया कि यस, मैं अब कर सकती हूँ. And then boom, she became sapphire, ruby, diamond, double diamond, triple diamond, crown diamond, and now royal crown diamond. तो सफलता के बाद उन्होंने सफायर, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड और अब रॉयल क्राउन डायमंड है. Yeah. And last time I went to Korea, she picked me up at the airport with her driver and her Rolls Royce. और क्या कहते हैं, तो वो लेडी उनको पिक करने एयरपोर्ट में आई, अपने ड्राइवर, और जो गाड़ी लेके आई थी वो रोल्स रॉयस गाड़ी थी. I was so proud of her. और उस वक्त टॉड को उनके ऊपर बहुत फख्र महसूस हुआ. Yeah, that's what motivates me to keep going because you could be the next one. और यही चीज़ प्रेरणा देती है और सफलता होनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर. Yeah, 10 years from now, who knows which of you I'll be telling a story about. और उनको नहीं पता 10 साल के बाद आप में से जो उस हॉल में लोग बैठे हैं, किसकी कहानी टॉड किस देश में शेयर कर रहे होंगे. But I want you to know this. This is a company that won't let you down. आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यूनिसिटी ऐसी कंपनी है जो आपकी सफलता के लिए वचनबद्ध है. Our products won't let you down. ये प्रोडक्ट जिस चीज के लिए दिए जाते हैं उस पर काम करते हैं. Our compensation plan won't let you down. और साथ ही साथ प्लान में भी बहुत पैसा है. We have got an amazing management team here in India. और यहाँ पर जो इंडियन मैनेजमेंट है बहुत सक्षम है. It's taken a few years to get the right one in place, but now we got the right one in place. कुछ समय जरूर लगा एक सही लोगों की ढूंढने के लिए, लेकिन अब वो सब सही लोग आ चुके हैं. And you can listen to their hearts. They care for the people here. वो दिल से आप सब लोगों की सफलता चाहते हैं. Yeah, they don't have big egos that think they know it all. They work with the leadership to help create the right environment where everyone can succeed. वो उनके पास कोई बड़ी ईगो नहीं है और साथ ही साथ वो फील्ड में लीडर्स के साथ काम करते हैं आप लोगों की सफलता के लिए. Yeah, everything's in place. सब चीजें सही समय पे सही जगह में हैं. We're not missing a thing. कोई भी एक ऐसी चीज मिसिंग नहीं है जो आपकी सफलता के लिए जरूरी हो. So whatever your dreams are, keep dreaming. तो जो भी आपके सपने हैं उनको देखते रहिए. Keep challenging yourself to get better every day. और अपने आप को ये चुनौती दीजिए कि आप प्रतिदिन और बेहतर होते रहेंगे. And your dreams can come true. और आपके सारे सपने जरूर पूरे होंगे. I wish all of you the very best of success. आप सभी लोगों के लिए चाहते हैं कि आपको वो सारी सफलता हासिल हो. And thank you for making me feel so good while I've been in your city.